पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग का थाना ही रहेगा कि हम लोग लेंगे घर तो, बट इधर हम लोग के बजट में नहीं मिल रहा है कुछ. एंड वी हैव सर्च फॉर द अंडर कंस्ट्रक्शन, सॉरी रेडी टू मूव एज वेल. बट वो रेडी टू मूव में वो भी प्रॉब्लम हो जाते हैं कि वो पुराने कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं. नहीं, लेकिन पुराने मतलब आई वुड जस्ट वांट टू आस्क यू अ फ्यू थिंग्स, ओके? बिकॉज व्हाट हैपेंस इज वी आर ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग को कुछ दिखा देना भी, इट्स वेरी इजी टू जॉइन द डॉट्स and they will see the truth. Alternatively, it's very easy to join the dots in a wrong way and they will see a lie as the truth. Okay. I don't know if you're following me. Human beings live inside their brain basically. हम लोग बाहर रहते नहीं है, दुनिया में कम रहते हैं और अपने दिमाग के अंदर ज्यादा रहते हैं. तो हमको जो दिखाया जाता है हम देखते हैं, और हमको जिस चीज का कंडीशनिंग होता है हम वही देखेंगे. Okay, so there is a lot of conditioning here. So I want to just point out a few things. आज कोई भी प्रोजेक्ट एक बिकता है, कोई भी प्रोजेक्ट, ओके, नया वाला. 2022 में भी गुड सब्सटेंशियल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स को ओसी मिला होगा, सब 2021 में भी मिला होगा, करेक्ट? राइट. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडर्न एमिनिटीज वाले प्रोजेक्ट, और 2020 में भी मिला होगा, एंड सो ऑन, 2019, 2018 एंड सो ऑन, ओके? Now let us assume that you take a choice between flats or projects where OC has been received from the year 2018 till 2022. That's a 4-year range. Okay. 4-year range mein, and nowadays most of the projects are huge projects. Right. Okay. कोई छोटे वाले buildings नहीं. Okay. If you go and stand outside one of these projects at night, शाम के 8 बजे 9 बजे, I am telling you with a fair amount of confidence that you will see only about 40 to 50%, maybe even less. Just a second. What? This is Nico. That cat had received from under the flyover. So who was the other guy? Who was the other guy, मतलब? मतलब I thought that guy also. Hello. हाँ, तो अभी you brought him home because, अच्छा, medicate him and take him down. हाँ, sorry. Yeah, no problem. हाँ, so I am telling you with a fair amount of confidence that if you stand outside one of these projects, you will see 30-40%, maybe 50% of the flats are lit up at night. Another 50% will be dark. Right. ठीक है. अब सभी लोग तो बाहर गांव नहीं जा रहे हैं. They are dark because although they are owned, builder has said they have sold. That is why they have given OC and सब कुछ कर लेते हैं, मतलब वो बेच बाच के निकल गए हैं. Right. अब बिल्डर के फ्लैट्स बचे नहीं है, बचे हैं तो 2-4 उसके भी बचे होंगे, बिल्डर फ्लैट, which is for ready possession. Rest will be investor flats. Right. इन्वेस्टर फ्लैट्स में भी थोड़ा भाड़े पे चढ़ जाता है. ओके. रेस्ट विल बी इन्वेस्टर्स हु डोंट वांट टू गिव ऑन रेंट, व्हिच मींस दे विल सेल सूनर और लेटर. ओके. अब इतना सारा इन्वेंटरी है. आर यू टेलिंग मी इट इज नॉट अवेलेबल टू यू एज रेडी पोजीशन एट वॉट एवर प्राइस? नाउ यू मे से नो क्रिश, वी फाउंड इन्वेस्टर फ्लैट्स but the possession, the price was too high. Okay, yeah. Now, suppose you are saying price is too high, you should have a data point to compare. Okay. Like I found Mr. Investor A, so and so project. That guy lives in USA, but we had a WhatsApp conversation, and he said this much price. Versus if we buy in under construction, then this much price. Okay. If we can compare, then suppose that guy is higher, but let us say he's higher by 1 lakh. I will say it makes sense for you to take that flat which is ready, and 1 lakh rupees more is not a big deal. Instead, if he says 10 lakhs, then we will compare, okay, 10 lakhs, that's substantial, but still let us set it off on this side. Here you are going to be paying rent. Okay, for living in a separate house while that house is getting constructed, and maybe if the construction doesn't happen according to schedule, then you pay more rent.
So then also we will say, okay, 10 lakhs, but we can set it off against bank interest, which you will be paying while your house is getting ready, which you should not count actually. I mean, which should not be there ideally. You should not be paying interest on a house which you are not living in. And versus you are paying interest on a house you are actually beginning to live in and use. So you understand what I'm trying to say? Yeah, I got it. Now, you are telling me the inventory is not there at all. वो कैसे हो सकता है? How is it even logically possible? But how to search it? means हम लोग मार्केट में सर्च कर रहे हैं, हम लोग को ऐसे. I'll tell you what's happening. What's happening is आप रियल एस्टेट एजेंट के पास जाते हो ना, हाँ, वो मैग्नेट की तरह आपको सेल्स ऑफिस की तरफ आकर्षित करते हैं. ओके. दे आर एंड उनके लिए सुपर इजी है. इट इज द इजीएस्ट वर्क एंड दे हैव अ गुड रीजन फॉर डूइंग इट ऑल्सो. देयर रीजन इज कॉम्पिटिशन. व्हाट दे से इज, अगर मैं नहीं करूंगा दूसरा मिस्टर बी लेके जाएगा तो दे विल गेट टैग्ड विथ मिस्टर बी. देयर इज अ टैगिंग सिस्टम. राइट. सो दे वांट टू टैग यू. सो व्हाट दे विल डू इज मैं उसको इनको लेके टैगिंग कर देता हूँ इन ऑल दीज प्रोजेक्ट्स. तो वो आपको 10 प्रोजेक्ट घुमाएगा एंड ऑल ऑफ देम विल बी रियल एस्टेट दिस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. राइट. करेक्ट. He has the intention of tagging you because वो tagging का effect next 90 days nobody else can say you are his customer. You become this guy's customer. अब वो आपको 10 जगह घुमाता है, उनमें से एक कोई ना कोई सेल्समैन आपको कन्विंस कर ही लेता है. So people are now being swept into this direction. So it is a bit there is an unequal market. Right. Okay. All estate agents are falling into this. However, and on the other side, if you see a resale, तो resale में estate agent को मेहनत करना पड़ता है. आप बात करोगे पार्टी के साथ, वो बैठेगा, he will facilitate the meeting. यहाँ पर उसको कुछ नहीं करना पड़ता. He hands you over to the sales team. He writes his phone number in the form and finished. It's done. वहाँ पे he has to do the work. He has to sit. He has to talk. He has to make you negotiate. He has to feel disappointed if you get up from the table without a token. Then he has to take you to another place, another party. This is his difficulty. So because of his difficulty, they are posing barriers. Because of the broker's difficulty, there is a barrier. Right. However, there is one way in which you can overcome this barrier. What you can tell the broker, see, one thing brokers don't have is liquidity. Right. Brokers के पास promises हैं builders के. They may have this builder owes me 2 lakhs, that builder owes me 5 lakhs in commission and so on. लेकिन आज यूज करने के लिए पैसे इस महीने में ऑफिस का रेंट में कैसे भरूंगा, उसके पैसे उसके पास कम रहते हैं. वो लोग लिक्विडिटी के लिए तरसते हैं. Right. What you can do is you tell the broker that fine, you show me 10 properties, okay, and at the end of the 10th property that you show me, these are the specifications. You show me 10 properties, I'll straight give you 2,000 rupees. Okay. Show me 10 properties, take 2,000, finished. Okay, but 10 ready possession, whether it is investor or resale. Okay, investor property is also a resale, and resale means जो लोग घर में रह रहे हैं, यूज किया हुआ. So or it can be investor का भी, it can be resale in the sense के भाड़े पे रह रहे हैं, वो आपको देखने भी देंगे. So you will actually see the house, actually see the environment. Okay. Apply your mind to कहाँ से हवा आ रही है, कहाँ से everything. Actually, sounds, the feel, whether there is wetness in the walls, you can get a feel of the whole thing. Right. And then you can purchase. You can strike a deal with the investor. Again, never strike a deal in the first meeting. Establish a direct contact with the investor. The broker will tell you something like this. He will say, सर वैसे वो 145 बोल रहा है लेकिन 140 पे लाके छोड़ेगा. Now what he is also telling you is 140 is not negotiable. Yes. Because negotiation is between 145 and 140.
Don't take that. One, it means price begins at 140 and your real work is to negotiate from 140 down. Okay. Okay. So you should not accept उसके दिए हुए गोली आप ऐसे ही blindly आ मत लो. You have to apply your reasoning. That 145 वो कह रहा है, आपके दिमाग में एक imaginary point create कर रहा है. Real point is 140 or in fact real point may not even be 140. Real point may be even 135. We don't know that until you speak to the customer, to the seller. Okay. So how to approach the seller, what to talk with the seller, whether seller is an investor sitting abroad or sitting in another city, or whether he is owner sitting here, उसके mindset क्या हो सकते हैं. Okay. Big long discussion, but right now I will suggest please crack one thing, which is please have a notebook in which you can write down the addresses of say 40. It's a low figure I'm putting, could be more actually, but I'm saying this. Suppose every weekend you guys, both of you, go out with broker. ओके आप उसको घुमाओ, रिक्शा में बैठा के पूरा घुमाओ, या अपने कार है तो कार में लेके पूरा घुमाओ. ओके. एट द एंड ऑफ द डे सपोज ही हैज शोन यू 5, गिव हिम 1,000 रुपीज. Okay. ओके. लेट हिम फील थोड़ा सा ग्रेटिफाइड. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो आता है ना, शक्कर, उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलने दो. साथ में रास्ते में उसको समोसे खिलाओ, डू ऑल द मेक हिम फील गुड. Let him have a glass of lassi and sugar उसके blood में जाने दो. Now let him feel like showing you another 2 houses, another 5 houses whenever. He will be, अरे sir आप इतना अच्छा मेरा देखभाल करते हो, I'm happy to show you houses. Okay. So let him feel the pleasure of just showing you the houses. Now उसको डील होगा तब डील होगा, लेकिन तब तक तो उसको पैसे मिल रहे हैं, कैश मिल रहा है. So this is the way you will have to counter the builder's hook. And if he takes you to under construction, you tell him, देखो तुमको टैगिंग करना है ना, ये लो टैगिंग कर लिया, ओके ना, अब मैं चला. Do not get into the sales talk of those guys, because those guys are seductive. They are trained to be seductive. They will pull you in. They will, सर मैडम आज का ये गोल्डन ऑफर है, आपको नहीं मिलेगा, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस. Right. And they can be very convincing. So please avoid. But उसको टैगिंग के लिए सेटिस्फाई करना है, चलो तुम्हारा टैगिंग करवा दिया, ओके ना हो गया, अब चलो. ओके. उसको भी सेटिस्फेक्शन हो जाने दो कि अगर आप वहां पे लोगे तो आप उसको कमीशन मिल जाएगा. लेट हिम फील दैट satisfaction. And for brokers, we need to search for our local area broker only, right? Yes. Ideally, we go to these small chaps with shops on the sides of the road, brokers. और कुछ लोग बहुत ही छोटे होते हैं, वो लोग भाड़े पे बैठते हैं, मतलब टेबल कुर्सी का भाड़ा देके बैठते हैं. Right. Very small. Go to those guys. Go to those guys. They are absolutely at the bottom of the food chain. And they will come with you, they will take you around. Go to those guys. They can show you, they know, उनको हर एक चप्पे चप्पे का पता होता है. कहाँ पे. You are suggesting to go for ready to move flat only. Don't go for under construction. I am suggesting that because the simple reason is, see, even very very large names, big names like Godrej. Right. Are also engaging in very unethical practices. Okay. Only yesterday I spoke to one guy who was telling me about Godrej property. He's a guy from Ahmedabad. He was telling me. उसको बाद में पता चला after giving the token कि Godrej property के लिए उसका बैंक, and he's a bank employee.
मैंने कॉन्फिडेंस में आके पैसे दे दिए कि गोदरेज प्रॉपर्टीज को तो डेफिनेटली यानी उसके प्रोजेक्ट को मेरा बैंक लोन दे देगा. राइट. इट टर्न्ड आउट ही सेज दैट मेरा बैंक गोदरेज प्रॉपर्टीज को खास करके लोन नहीं देती. ओह माय गॉड. पहले दे दिया, 1 2 3 डील्स दे दिए विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द डील वाज ऑल अबाउट. नाउ दे हैव स्टॉप्ड दिस एंड दे स्पेसिफिकली डोंट गिव इट फॉर गोदरेज प्रॉपर्टी. और ये कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा. It is a nationalized bank. So you can understand the level of crookedness that is happening. Don't go based on these brands. चाहे वो L&T हो, चाहे वो Godrej हो, चाहे वो any name. Don't go according to the brand name at all. No, we watched like 2 projects. नहीं, एक project हम लोगों ने ये देखा ना, Runwal Ancient. Right. But that is very strong. Sorry? Don't go to Runwal, I said. Okay, they doesn't deliver on time. बहुत छाड़ देंगे. Okay, there is one project called Runwal Infinity. Okay, it was initially called Infinity, then it got renamed as the Sanctuary. It got renamed as the Sanctuary. 2000 I think 13-14 में लोगों ने बुकिंग किया है. Okay. और अभी भी मिला नहीं है. एंड दे मे हैव टू वेट टिल 2026 or so. They are saying they will give possession. Oh my God. Okay. Runwal Sanctuary. तो लोग रो रहे हैं. उसको रीनेम कर दिया एंड दे चेंज द प्लान्स एंड दे आर सेइंग वो जो पहले जो टावर खड़े किए थे यानी पूरा खड़ा नहीं हुआ था बट द आरसीसी स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट उसको तोड़ के दोबारा बनाएंगे. अरे बाप रे. हाँ. And what about this unique vista in Manpada? They are saying that they give unique vista. I don't know it. I don't know about that. Okay, that So is in Manpada. Here's the thing. I don't know about each and every project. Okay. Okay. What I know about is when people come to me or when something has happened which makes me notice a project. Otherwise, there are literally thousands of projects. Okay. And I'm a one. Any other chance without broker can we search investor property? Try nobroker.com. But I have a feeling, I'll tell you what happens. If you go by any digital media, it will go towards under construction. हाँ, yes. हाँ, आप Facebook groups में वगैरह डालो आपका requirement. But unfortunately, if you put your names in the thing, any digital हो जाता है, कॉल आने चालू हो बहुत कॉल्स आएंगे, इतने कॉल्स आएंगे आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे. अब उसके लिए आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, एक सेपरेट नंबर रखो. हाँ, yes. एक सेपरेट नंबर ले लो ओनली फॉर दैट पर्पस. एंड आफ्टर यू फिनिश योर वर्क, आफ्टर योर you closed your deal or whatever, then you can delete that number. ऐसा कुछ करना है तो करो. You will be swarmed with numbers, but you will have to be very firm and say, I only want to talk to investor property. But the only person ready to move, if we are going now, it is costing us around 20 lakhs more than 20. And but that is ready to move. That is assume that is true. Exactly. Assume that is true. Okay. I'm assuming that is true because that is not necessarily true. But let us take it. Suppose that is true. It is costing 20 lakhs more. Yes. Suppose under construction is going to come after 3 years. That means, and suppose you have to assume that चलो 36 months में मिल जाएगा. नहीं मिला तो right. In the meanwhile 36 months के लिए आप EMI भरोगे, प्लस रेंट भरोगे, प्लस वेट करोगे. You will watch in tension. अरे हो रहा है कि नहीं, अरे काम रुका हुआ है, पता नहीं क्यों रुका हुआ है, अरे कोविड का और एक वेव आ गया, पता नहीं क्या होगा, right. पता नहीं क्या होगा. So your entire existence becomes only about that. रोज आप पेपर पढ़ोगे, देखोगे और एक बुरा न्यूज आ गया तो आपका दिल रुक जाएगा. Correct. And yeah, very much true. So instead of that, here you live in a house. Yes, you're paid more, but you're paid more because it is minus the risk. The house exists and you started enjoying it.
Exactly. Correct. And one more thing, I am aware of few flats investors की होते हैं, वो लोग स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन नहीं करते एंड वो सेल के लिए निकालते हैं. तो वो कहाँ से मुझे डेंजरस है क्या वो? Don't do it. Those guys are dangerous. Those guys are dangerous. अगर उन्होंने अगर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो बिल्डिंग का ओसी आया हुआ है लेकिन स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और बिल्डर के साथ आपको डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे. वी आर कनेक्टिंग यू डायरेक्ट विद बिल्डर. यस, बिल्डर ही बेच रहे हैं. बिल्डर ही बेच रहे हैं. चलिए एक बात बोलूं, लेट्स डू वन थिंग. अगर ऐसा मिला ना, you will examine the deal on its merit. You will examine the deal on merit. Don't close the door on it. We will look at it. I'll help you look at it. You identify the deal. I'll help you to understand the deal. Okay? Yeah. We need your guidance. So, and what about how? अगर मिल गया तो आप मुझे बताओ. And how should we go with, like, should we opt for Ghodbandar Road, जो थोड़ा बाहर है, और we should go directly to Pune ही चले जाए, हम लोग आप बचा सके. travel to nearest. Okay, so how do you normally live? Like, are you guys commuting by train or are you guys commuting by car or what's your deal? Or scooter or what's the, how do you? अभी तो वर्क फ्रॉम होम ही है तो कुछ फिर भी जनरली जब आपको कम्यूट करना पड़ रहा है, आपका लाइफस्टाइल क्या है? कार से ही जाते हैं नॉर्मली. You are traveling by car. Both of you drive? No, my husband drives. Okay. So you need to figure out 2 or 3 things. One is आसपास में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. Okay. Even for maintenance of your car, आपको गैराज वाले को बुलाना भी पड़े. कभी कभी मेरा गाड़ी यहाँ पे बंद पड़ जाता था, घर के पास बंद पड़ जाता था, you know? तो नजदीक में ही बैटरी वाला है, नजदीक में ही पंचर वाला है, नजदीक में ही मैकेनिक है. So you can handle it easily. Within delay of 1 or 2 hours, you can handle it. Right. So infrastructure नजदीक में होना थोड़ा जरूरी है. Okay. नजदीक में चलो, और मैक्सिमम लेट अस से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर नजदीक में गांव है. 4 किलोमीटर इज अ लिटिल फार इफ यू आस्क मी, बट यू कैन टेक इट सिंस इट इज आउटस्कर्ट्स. लेकिन वहां पर अच्छे से 2-4 गैराजेस होने चाहिए. दैट वे. अगर वो नहीं है, then you should consider whether you really want to do that, because if you have a breakdown, which you may expect. But sir, Pune is developed, na? Pune has different localities. Some of them are really in the outskirts. Okay. And some of those parts are really, when you travel inside Pune से हाईवे पकड़ने में बहुत लंबा हो जाता है. I have seen places where you travel for 45 minutes, 1 hour. You know, okay. So it is developed in that sense. It is developed. It's a city. Achha. But you should understand. Achha, another one thing I'll tell you. Just think about it. Okay, consider this. आप फिलहाल कहाँ रह रहे हो? थाना में. थाना में कहाँ पे रह रहे हो? नितिन कंपनी. कोरम मॉल के बाजू में. Very good. Okay. So you have an idea in your location, correct? Right. Now in your location, I'll tell you to close your eyes and think about a good part of your locality and a bad part of your locality. Correct. Okay. मैं जिधर बैठा हूँ in बोरीवली, in रहेजा, if I go out of my main gate, main road, and take a left turn, within 100 meters, वैसे सामने ही है slum area. Within 100 meters, okay? मेरी विंडो से उसका एज भी देख सकता हूँ. slum area. If I go right, good area. If I go left, slum area. ठीक है? पूरा एरिया का नाम कुलुकवाड़ी हो गया. So somebody tells me, अरे कुलुकवाड़ी रोड में बहुत अच्छा बिल्डिंग है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है. I will not know enough to ask him, boss, कुलुकवाड़ी रोड में this part or that part? This part is good area, that part is slum area. In my area, there are buildings with names like Bansi Nagar,
and Ashoka Tower. Now you don't know whether Ashoka Tower is a good place to live or Bansi Nagar is a good place to live. You do not know. Correct. Same, they are within half a kilometer distance. Bansi Nagar is a bad place, I would say. Okay, based on few parameters, I would say Bansi Nagar is a bad place. And Ashoka Tower is a decent place on some parameters, based on some parameters. Okay? I'll say its access is good, it opens to a good place, etc. The other one, access is terrible, सीधा ओपन फ्रंट गेट से जाओ सीधा स्लम, कहीं भी जाना है पहले स्लम आएगा या हाईवे आएगा. Now these are the local factors. Now who will know the local factors? Only a person who is local. Correct. If you want to go and live in a locality, ideally you should have at least वहाँ पे जाके भाड़े पे एक आध साल के लिए ठीक से रहोगे ना, then you will understand. Like 11 months, 11 महीने का भाड़ा लेके if you stay there in that locality and then walk around, you will understand. अच्छा ये लेन अच्छा है, वो लेन not so good. Good this point, part sir. of that lane is good, that side of that lane is not good. And what about if any relative or any friends are living and we can get there? So you go and visit them. At least you go and visit them, have lunch at their place, and then walk around for the next couple of hours, understanding the locality, understanding kaun sa kaisa hai. Achha, again, within the same, one more, this is an invisible, it is very difficult to understand, but फिर भी वो घर के अंदर जाके समझ में आ सकता है. One invisible thing is water condition. I live in a pretty prestigious place called Raheja Estate. Now, Raheja Estate में there are some buildings which suffer from water shortage and some which don't. Some of the best looking buildings have water shortage. Okay. And my building also very good looking, but not so, no water shortage. There are factors. अब ये दोपहर को पानी मिलेगा कि नहीं, this kind of thing is something you need to figure out. So you have to go to that house. You have to start all the taps. You have to run all the taps. I'm assuming it's an empty house. Okay, but an investor property which you are allowed to see. Go to the bathrooms and open all the taps and run the taps and flush. And see, and if you're going in the afternoon, you will understand whether you're getting water or not. So to run and flush the taps. Flush the toilet, run the tap. Okay. Open the kitchen tap, run the tap. And by default, the tap water should taste good. You should be able to drink from it. Should not be from... It should not smell dirty. So if something is smelling dirty, again, I would say that's a little bit of a minus point there. So let me give you an example. I have gone to a very prestigious Kalpataru project in Mira Road when I was house hunting. Very prestigious. मेरा पूरा यानी वो prestigious बोल के मुझे चढ़ा दिया था. It had kind of gotten inside me. I went there. I found there were disputes. So I stood in the window. I saw, अच्छा ये building, ये प्रोजेक्ट में वहां पर पुराने दिख रहे हैं, यहाँ पे नया है और बीच में ब्लू पत्रा, ये है क्या? बोले हाँ सर, वो सेम प्रोजेक्ट है लेकिन बहुत पहले बनाए हुए बिल्डिंग. अच्छा किसने पहले? 30 साल पहले. सेम प्रोजेक्ट लेकिन 30 साल पहले. तो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2016 बिफोर रेरा. So I said, वो ब्लू पत्रा क्या लगाया हुआ है? Now these are questions you should be able to stand and ask. You should think about it. नहीं सर, वो ब्लू पत्रा फिर क्या हुआ वहाँ पे, उनका और हमारे ये सोसाइटी का झगड़ा हुआ, फिर डिस्प्यूट हुआ, फिर कोर्ट ऑर्डर्स आए, फिर वो ब्लू पत्रा लगा दिया. अच्छा ठीक है. Then I went and flushed the toilet. It was the smell of sewage. Okay. भयंकर स्मेल आया. मैंने 2-3 बार फ्लश किया. I went to another toilet in the same house. Flushed that one. Again strong smell of sewage. I said, boss, ये smell क्यों आ रहा है इतना?
नहीं सर, वो क्या है, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट है ना, तो ये सब पानी को लेके ग्रे वाटर ये करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। अच्छा ओके, तो एसटीपी का स्मेल है, ठीक है। नाउ मीरा रोड इज अ वाटर शॉर्टेज एरिया, so they are recycling the water, which is a good thing. Recycling is a good thing, but at the same time, if you're buying a house, you should know whether it's going to smell like sewage or not. Right. So then I went down. I said, well, one thing we should do is don't be in a hurry to leave the building. This guy will be in a hurry to take you. Or estate agent wants to take you from point to point. If they chalo sir lift me, you say no, wait. You walk around. You look at the other houses. You go to the stairwell. You walk down the stairwell. Okay, use the staircase. At least for a few floors, use the staircase. Look up, look down. उसका ventilation देखो, वो सब देखो. Get a feel of the building and go down. नीचे जाके again don't just go point to point. He will want to take you. No, walk around the compound. Take a leisurely walk around the compound. उसके pressure में मत. So in this place, Kalpataru, what did I see? I go down. यार यहाँ पे सुएज का बहुत स्मेल आ रहा है। हाँ सर, वो क्या है ना सर, बाकी के सारे ये बेच दिए हैं, only this tower they have not been able to sell. Why? Because of sewage smell sir. तो मेरे को बताया नहीं तुमने। What is the problem? Why sewage smell? नहीं सर, वो एसटीपी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा सर, डोंट वरी अबाउट इट, सॉल्व हो जाएगा। मैंने बोला यार इतने महीनों से या इतने वर्षों से अगर सॉल्व नहीं कर पाए हैं, आज अचानक सॉल्व कर देंगे, क्या बात कर रहे हैं। दिस वाज आल्सो फ्रेंडली, ही वाज अ फ्रेंडली एस्टेट एजेंट, ही इज माय फ्रेंड टिल दिस डेट, ही इज माय फ्रेंड, ही इज अ बडी। लेकिन वो भी ऐसे सब करते हैं। So these are things you need to apply your mind to, because बाद में livability issues बनते हैं। But now they are saying it's mandatory for STP for every building. तो ठीक है, एसटीपी होने वाला है, एसटीपी होना एक बात है, लेकिन एसटीपी का लोकेशन क्या है वो आपको जानना चाहिए। हाँ। You have to know where is the STP. You have to relative to your flat. Okay, for and STP, if it is close to your flat, can be a problem. It can be problematic. I don't know if you have seen my video on there is one. There are some people who are living in a building right opposite STP. Oh my God. Right opposite STP. और STP को उन्होंने लोधा ने अच्छे से कवर अप किया था। तो वॉल पे पूरे प्लांट्स थे, आईवी के प्लांट्स थे जो नीचे लटक रहे थे अच्छे से। यू विल से व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इतना अच्छा सजावट है। बट दोज गाइज वर टेलिंग मी हम लोग लड़ के थक गए हैं, एंड आई वेंट एंड मेट द सेक्रेटरी एंड द चेयरमैन ऑफ दैट सोसाइटी एंड द गाय विथ whom I had a conversation. And what they were telling me is, लोधा ने हमको ये जगह बेचा, फिर इनके सामने फील्ड होगा, फुटबॉल फील्ड है, फिर बोला फुटबॉल फील्ड नहीं है, स्कूल का ग्राउंड है वगैरह। एंड एक्चुअली सामने पड़ता है, सीधा सामने पड़ता है एसटीपी फॉर ऑल दीज टावर्स। Oh my God. ओके, अब वो सीधा सामने मतलब इट इज अबाउट हाउ मच आई विल टेल यू, इट्स अबाउट 50 फीट अवे, 50-60 फीट अवे, बीच में रास्ता आता है, उसके आगे एसटीपी है। आई सेड दिक्कत क्या हो रही है? आई सेड ओके, पहली बात है यू जस्ट स्टैंड हियर एंड लुक अप, यू विल सी ऑल द विंडोज आर क्लोज्ड, नीचे से लेके ऊपर तक। व्हाई in this kind of weather, beautiful weather we are having, why are people keeping the windows closed? आप पता लगाइए। This is on some days and in some weather conditions like winter, the smell is unbearable. And if we in summer, STP से जो हम लोग एसी चलाते हैं, तो कहते हैं एसी के जो ब्लेड्स वगैरह हैं आउटडोर यूनिट के, फैन ब्लेड, वो सब कोट हो जाते हैं, एक परत आ जाती है उसके ऊपर। नो, इट्स अ वेरी अनयूजुअल काइंड ऑफ अ कोटिंग। सो it is smell, particulate matter, all kind of thing. And it is when they clean out the STP, the noise, so they have a maintenance routine. Maintenance routine के टाइम में बहुत जोर जोर से नॉइस भी आएगा, स्मेल भी आएगा।
So they really regret it. Now you should know what you're getting into. Right. So No, we have gone on paper. We like very much हमारा, but जब भी अंदर गए ना तो हम लोग hardly we stayed there for 5-10 minutes. वो इतना नजदीक है सब बिल्डिंग, एक दूसरे की खिड़की से दूसरा खिड़की दिखता है. there is that also factor. और वो भी we went on वो पब्लिक हॉलीडे 15th अगस्त, सब लोग नीचे थे. ऐसे लग रहा था कि सब लोग एक साथ सब नीचे ग्राउंड में आ गए. तो ग्राउंड छोटा पड़ने लगता है. हाँ, गाँव था गाँव जैसे लग रहा था, एकदम क्राउडेड. दे आर सेलिंग इट फॉर 1.30 1.40 करोड़ में. क्या दे रहे हैं वो लोग? करेक्ट. So you need to look at these things. अच्छा, अभी now I'll tell you why I say that. Yes. Walking around and seeing and this kind of things can actually get you a bargain. Okay. See, once people have bought a house, let us say Amara, for example, that person, whoever is wanting to sell, okay, now we are talking about compromising quality, okay? Yes. Suppose there is someone who sees the problem, who understands the problems and is living there, and he wants to move out, and he has the means to move out. तो उसका मेंटालिटी क्या होने वाला है? उसका मेंटालिटी ये होगा, आई विल हैव टू सेल एट अ डिस्काउंट. करेक्ट. ओके, मैंने खरीदा था 1 CR में, आई एम विलिंग टू सेल इट एट लेस. आई एम विलिंग टू सेल इट एट 90, आई एम विलिंग टू सेल इट एट 80. यू मे से अरे बट लेकिन मार्केट कुछ और. अरे सर, मार्केट को छोड़ो ना, मैं बेचने को ट्राई कर रहा हूँ, नहीं बिक रहा है. सो देयर इज वन इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. There is, literally speaking, there is no such thing as एक market. There is no market. लोगों के दिमाग में एक बैठ जाता है, what is the market price? Okay? I will tell you what is the market price. The market price is whatever price that guy wants to sell at and you want to buy it. That is the market price. Now that guy may want to sell at unexpectedly low rate. Okay, why? Not necessarily because it is damaged goods. वो भी हो सकता है. You may have wetness in the walls which the guy cannot remove. You may have a bad neighbor. You may have a number of bad neighbors. You may have a bad relationship with the society. Now suppose this guy has a bad relationship with society. Just think about it. एक बंदा है, for good or bad reasons, उसका relationship with society बहुत खराब हो गया, बहुत झगड़े हो गए. Okay, उसका रहना मुश्किल हो गया. Now there are two possibilities. One possibility is यार उसके neighbors बहुत ही cantankerous है, they are very bad people. Possibility number one. Possibility number two is यार झगड़े हो जाते हैं, और जब हो जाते हैं between adults वो सुधरते नहीं सोसाइटी में. It will सालों साल वो एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे तो they will cross the road. Right. Okay, हो जाता है. खराब हो गया तो फिर उसको सुधारना almost impossible. Now suppose that there is this guy who's living in a society like that. डेली झगड़े और वीकली झगड़े होते रहते हैं. उसका माइंडसेट क्या होता है? लेट मी लीव, लेट मी गो अवे फ्रॉम हियर, लेट मी गो टू अनदर प्लेस. ही इज अंडर प्रेशर. ओके, ही इज विलिंग टू सेल एट अ डिस्काउंट. प्रॉब्लम just to cut you, प्रॉब्लम यही है ना कि वो हम लोग जाएंगे तो हम लोग को थोड़ी वो सच्चाई बताएंगे. नहीं, बिल्कुल नहीं बताएंगे. 100% नहीं बताएंगे. आई एग्री विथ यू, बट आई टेल यू व्हाट यू हैव टू डू. नाउ अनलाइक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी वेयर दे से अभी नहीं तो कभी नहीं, रीसेल प्रॉपर्टी में the same guy may not have been able to sell the flat for the last 1 year or 2 years. अब क्यों नहीं? he has not been able to sell the flat, maybe he is quoting the wrong price. So he is saying 1.3 में नहीं बिकने वाला है. ओके, वही चीज 1.1 में बिकेगा या 1 में बिकेगा. ओके, नाउ सपोज ही हैज बीन सेइंग 1.3. वो व्हाट यू हैव टू डू इज अंडरस्टैंड वो 1.3 कितने टाइम से पकड़ के बैठा है. So what you have to do is enter into a conversation with him. Now, casual talk, small talk. Okay. So be very nice. Say, I like your house, beautiful house, nice house. Praise karo thoda sa.
ओके, बाद में उसको डाउन करना है तो वो बाद में करेंगे, पहले प्रेज करो, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, आई रियली लाइक दिस दैट, एंड यू से we have been trying to sell our house in whatever Kusalgaon or whatever you name a place where you know, कोई भी नाम बोलो अपना. Imagine you are selling your house and you tell him we have been trying to sell our house. यार गए 2 साल से ब्रोकर को बोल के रखा है, वो बेच नहीं पा रहा. लोग आके देख के जाते हैं, बिकता नहीं. नाउ सी व्हाट ही सेज, यू आर ट्रिगरिंग हिम. अगर वो हमदर्दी में चला गया, आई मीन see negotiation, now you have to think like like a politician. So what you are trying to do is disclose this card. So suppose he says हाँ मैंने भी अभी सर 3 साल से बेचा नहीं, 3 साल 100 लोग आके देख के गए, 200 लोग आके देख के गए, हर रविवार कोई ना कोई आके देख के जाता है, लेकिन बिकता नहीं है. सो नाउ यू नो हिज वीकनेस. ओके, नाउ यू नो दैट वो 130 में लेके बैठा है लेकिन वो बेच नहीं पा रहा है. राइट. सपोज यू लाइक द हाउस. Okay, and like is it's a relative term. See, when I go and buy mangoes, I may not buy the A quality Apus mangoes which are export quality. Right. I may be okay with B or C quality, smaller but sweet. So same way there is a compromise. You are not going to get Sapno ka Mahal. You are going to get a real place. So suppose you assess it and you say it is good at 110. आप दोनों assess करके आप सोचते हो this one अगर हमको 110 में मिलता है तो ये ठीक है. Right. So what you may do is first of all exchange numbers, WhatsApp number ले लो and all. And then what you say is sir okay, so here are the downsides. Don't make him angry. Don't spoil the relationship. मेरा कंस्ट्रेंट ये है कि मैं 110 में ले सकता हूँ, और 110 में होता तो मैं आज ही टोकन कर देता. अब वो भी बोलने की बात है, करने वाला काम नहीं. बट 110 में होता तो आज मैं अभी एक टोकन कर देता, अभी कर देता. ओके. यू विल से नो 110 कैसे बोल सकते हो, 130 है. नो, आई फुल्ली अंडरस्टैंड एंड आई अप्रिशिएट सर. मेरा भी वही हाल है, मैं वहाँ पे बेच रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू सेलेक्ट 90 नहीं मिल रहा है, मुझे 70 के ऑफर 75 के ऑफर्स मिल रहे हैं. सो आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड. और मेरे भी लिमिटेशंस हैं. आई हैव टू आल्सो, आई एम बोथ अ सेलर एंड अ बायर, एज you set up that whole kind of hamdardi thing. And you say, anyway sir, very nice to speak to you, I will be in touch. Take his phone number, a WhatsApp number, etc. etc. ऐसे करके you create a short list of, let us say, 8 people or 6 people, 6 flats, which you like in varying degrees. Now you have a short list. Okay, so to have a short list of 6, you should have gone and seen at least 60 flats. Okay, 1 in 10 you have to put into short list. Rest you have to put in the reject list. So let us say you have a short list. Let us say 6 flats, let us say 4 flats. You have short list. Now what is the likelihood that all of them will be sold in the next 1 month or 2 months? Not likely. Right. Now you start sending him messages. You send him Jai Shri Ram, Ganpati ka message भेजो, जो भी message भेजो, गोकुलाष्टमी का message भेजो. Just say hi, hello, good morning. Once in a while, don't be over, just a little bit. You start sending messages, staying in touch. Then after 2 weeks, you call him and say, क्या हुआ sir? No, क्या बात कर रहे हो यार, बेचने में बहुत टाइम लगता है. Then again you reinforce your message, sir, I am there for you, but at 110. So you work on these people, work on them for a few months. In the meanwhile, you are seeing other properties also. So you may add or discard from your shortlist based on what you see. And
just it's a long term project. It's not very short term, but think of it as entertainment. Every week you're going out, you're spending 2,000 rupees, giving it to the broker. That's okay. It's an investment. Yeah, actually. Okay, it's an investment. You're building up your shortlist, and by the end of 4-5 months, you will fully understand the geography of that place, and every possible flat that is within your budget, you will have seen it. फिर आप कंपेयर कर सकते हो, अरे इसमें क्रॉस वेंटिलेशन कितना अच्छा था, उसमें विंडोज कितने वाइड थे, इसमें इसके बाथरूम्स कितने ब्यूटीफुल हैं, इसका डन अप था, हमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इंटीरियर नहीं डालना पड़ेगा, उसमें इंटीरियर करना पड़ेगा. सो यू कैन कंपेयर ऑल्सो. So in this way you can come to a final deal, and when you come to that final deal, then ले देके थोड़ा खींच के थोड़ा ये करके छोड़ दे. अभी what is happening ना, few buildings which are newly constructed now, अभी ब्रोकर से हम लोगों ने एक ब्रोकर से कनेक्ट किया था. We haven't searched vigorously, अभी एक ही को ट्राई किया था फिलहाल. तो वो जो न्यू कंस्ट्रक्शन वाले बिल्डिंग में वी विल ट्राइंग कि उसमें कुछ है क्या फ्लैट, तो वो डायरेक्टली सेड कि नहीं कुछ नहीं है, सब ऑक्यूपाइड है. बट एज यू सजेस्टेड ना व्हेन वी स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन कि आप देखोगे इतने सारे बिल्डिंग खड़े हैं, उसमें से थोड़े फ्लैट्स तो होंगे ही बेचने के लिए, राइट. बट वो अभी हम लोग ब्रोकर से कनेक्ट कर रहे हैं, दे आर डायरेक्टली डिनाइंग कि नहीं सब कुछ फुल है, नथिंग इज देयर, ऐसे ही बोल रहे हो लोग. जो अभी जो मिला मुझे हम लोग ब्रोकर, तो आर दे सेइंग लाई और वो कैसे करे हम लोग? It's difficult to tell. Okay. It's difficult to tell. Again, with brokers also, what you do is first response में भी सब कुछ नहीं है, सर आपके बजट में कुछ भी नहीं है. हाँ. You may hear that. आपके बजट में कुछ भी नहीं है. Right. ठीक है, चलो बजट थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, दिखाओ. Show me places which are 20 lakhs over my budget. चलो देखो तो दिखाओ तो सही. You will they are not showing on a newly construction जो है ना, at least we were trying कि एकदम पुराने नहीं है तो न्यू कंस्ट्रक्शन में, तो न्यू कंस्ट्रक्शन में जाते हैं कि नहीं है ही नहीं, तो उनको वो बताना पड़ेगा, राइट? I think you will have to see a substantial number. There it is. You just have to night the eye. पहले हम लोग भी बहुत डिस्करेज हुए थे. When we moved into my present house, बहुत डिस्करेज हुए हैं, because when we used to go to a broker, सीधा वो सर 180 के नीचे मिलेगा ही नहीं आपको, 180, 190. राइट. और यार 180, 190 में मैंने बोला चल दिखा तो सही, तो दिखा रहे तो ऐसे फालतू भयंकर दिखा रहे हैं. मेरी बीवी मुझे डांट रही है. I was taking her to places and she was like, ये क्रिश तू क्या कर रहा है, you are wasting my time. Her time is more valuable than my time. तूने मुझे क्यों दिखाया? I would say, but it's a good house. She's like, what do you mean good house? देखो सामने मार्शेस दिख रहे हैं, नीचे स्लम्स दिख रहे हैं, डायरेक्टली स्लम्स के ऊपर है. What do you mean good house? अरे बहुत दिखाया था. And actually it helps, okay? It helps if one person's temperament is more critical. I'm grateful that she had more of a critical temperament than I do in this respect. मेरा थोड़ा adjusting वाला temperament है. I am like, हाँ ठीक है ना, इसमें रह लेंगे, अच्छा है, क्या है, प्रॉब्लम क्या है? That is the case of in my husband. मैं बोला कि उसको सब में निकालता है कुछ ना कुछ. मैंने उसको कल यही बोला कि अरे तू ऐसे देखेगा तो कुछ मिलेगा ही नहीं हम लोग को हमारे बजट में. Right. So one partner has to have थोड़ा critical mind. My wife has that. So when I showed her the houses, she was angry. अरे क्या तुम दिखा रहे हो यार? I used to go scope out the places. I would see 10 places. I would shortlist 3 places or 2 places, and then go and see it. And even when we are traveling with the broker, मैं कहता हूँ यार कम से कम उसका तो थोड़ा ये रख, ये कहाँ आ रहे हैं, ये कैसा एरिया है, ये पतले पतले गलियों में से क्यों गुजर रहे हैं हम लोग. रास्ता होता है, एक रास्ते से गुजर के जाना होता है. I don't like the locality. I don't like the feel of the locality. ऐसे पहले घर देख तो लो. But it's necessary for one of us to have that temperament. It helps.
कंस्ट्रेंट आ जाता है पैसे का ना, वही वो बोलते हैं कि अगर तुझे वैसे घर चाहिए तो 2 करोड़ में लेना पड़ेगा। नहीं, so you will have to be that थोड़ा वो एक, as I said 180 they were saying 185. Hello. 185 they kept saying. You know, I was very discouraged. I said यार, और I used to see buildings which were 20-25 years old, और मैं देख रहा हूँ वो बिल्डिंग में मेंटेनेंस की जरूरत है, एंड आई एम कमिंग बैक एंड आई एम सेइंग इसमें देखा मैंने 185 बोल रहे हैं, उसमें देखा मैंने 175 बोल रहे हैं, और हमारा बजट एकदम कट टू कट 150. सही, हम लोग का वही केस था. Ultimately we stretched to 1.6, but 150 was our budget. We managed to stretch to 1.6. And of course it was not a bad thing. Okay. But ऐसा था, बट 180 के नीचे आपको मिलेगा ही नहीं. फिर ऐसे ऐसे भयंकर जगह दिखा रहे थे, कहीं किसी का फर्स्ट फ्लोर अंधेरा, एकदम हॉरिबल. हम लोग का ऐसी ही सिचुएशन है सेम, जो वो बोल रहा है कि 180 का वो भी ऐसे भयंकर चीज है, तो हम लोग वही डिस्करेज हो रहे हैं. हम लोग चलो यार पूरा जाते हैं. इसके लिए डिस्करेज होके ही हम लोग ने सोच लिया अरे जाने दो, हम लोग हमारे बजट में शायद फिर भी मिलता है. एंड फनी ना, so I live in Borivali. My brother-in-law lives in Malabar Hill. Malabar Hill is on the other side of town, if you have an idea. Yes. Very fine, South Bombay. South Bombay. Now, funny enough, मेरे ये बगल में छोरा वाला सीन हो गया. I had gone and scoped out some house, but it was about 2 kilometers from where we presently live at that time. 2-3 kilometers and poor access. Very poor accessibility. Good place, poor accessibility. तो मैं वहाँ पे सब देख रहा था, उस बिल्डिंग में, उस टावर में मैं फ्लैट बहुत सारे देख रहा था. एंड माय वाइफ वाज सेटलिंग इन. चलो ठीक है, ये कुछ तो ढंग का दिखा रहा है, कुछ तो ढंग का दिखा रहा है ना. वो पुअर एक्सेसिबिलिटी शी वाज क्रिटिसाइजिंग, यानी ये स्लम्स के बीच में से गुजरना पड़ रहा है एंड ऑल दैट. कितना दूर है स्टेशन से, ये देखो कितना टाइम लग रहा है ड्राइविंग में, कितना ट्रैफिक जैम रहता है यहाँ पे. बट फिर भी शी वाज टॉलरेटिंग बिकॉज शी सेड ओके गुड प्रोजेक्ट. देखने में जब अंदर जाते हैं तो अच्छा लग रहा है. At that time, very funny what happened was, my brother-in-law said, I will help you. Okay. I was very skeptical. I said, यार तू मलबार हिल में बैठा हुआ है, तू क्या हेल्प करेगा मुझे. He went to a South Bombay broker. South Bombay broker, अब broker to broker connection होते हैं. Gave him the connect of another broker whom I very well knew and with whom I had visited houses also, but I had not touched him that time. Okay. For some reason I had not gone to this guy. That day I gave him that connect. अच्छा, वो कनेक्ट भी नहीं, पहले उसने दूसरे एक बिल्डर का, एक ब्रोकर का कनेक्ट किया. This broker took us to a place which is very close to my place. Good place, good house. और घर देखा हमने तो मैंने मुंह खुला रह गया. Very happy. My wife was very happy. And because it genuinely was very good. This is the where I'm staying. Okay. और उन्होंने कहा 1.6. और बहुत नेगोशिएशन करने को ट्राई किया, 1.5 के तरफ बहुत दबाया. और वो लोग डिस्ट्रेस में थे. They were literally selling in distress because उनके सर पे बहुत बड़ा लोन था. This is another angle which I want to tell you. कि जो लोग लोन के प्रेशर में आते हैं ना, they will go below market rate. Yes. Those who have taken loans, who are themselves हर तरफ से फाइनेंशियली दब गए, you can expect a good deal from them because उनको मंथ बाय मंथ प्रेशर रहता है कि यार EMI बिल्डअप हो रहा है, मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ, उसके ऊपर पेनल्टी चार्जेस बिल्डअप हो रहा है, मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ. So they will be under pressure to give you. Of course, this party was quite tough. वो उन्होंने एक प्राइस लाइन पकड़ा तो पकड़ के ही रखा. But that price line itself was quite low compared to other prices. And what about sir those flats which bank ही खुद पे ये करती है, auction करती है? I am told there is a way to do it. I know people who have bought it and I know people who have bought it
made good deal, and I am envious of those people also. उसमें कभी कभी करप्शन इन्वॉल्व होता है, इन द सेंस बैंक वाला एम्प्लॉय को थोड़ा पैसा देना पड़ता है, दैट काइंड ऑफ थिंग. थोड़ा इनसाइड चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड देयर आर आल्सो कार्टेल्स. दे विल बिड एट ऑक्शंस एंड दे विल टेक एवरीथिंग. वो एक दूसरे के अगेंस्ट बिड करते हैं, लेकिन सो देयर आर कार्टेल्स लाइक दैट. वो बाहर से किसी को आने नहीं देते हैं, द काइंड ऑफ ब्लॉक है. देयर आर ऑल्सो वो बहुत सारे टैक्टिक्स वाला काम है, खुद ही भेज देते हैं. फिर भी अगर मिलता है तो अच्छा है, लेकिन उसको इट शुड बी, यू डोंट वांट कि उस घर में एक भाई रहा करता था और बैंक ने उस भाई से घर ले लिया और वही भाई आपके पास आके झगड़ा कर लिया. थोड़ा नेगेटिव वाइब्स नहीं आने चाहिए, वो भी होता है ना. हाँ, वो भी है. ऑक्शन में चला गया तो किसी के तो सेंटिमेंट्स रहेंगे. करेक्ट. सो देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू शुड बी अ लिटिल बिट कंसर्न्ड अबाउट, बट इट कैन बी अ गुड थिंग आल्सो. वो रास्ता मुझे पता नहीं, आई एम नॉट फेमिलियर विद दैट. लॉन्ग बैक देयर वाज वन, इधर था बसंत विहार में 1.5 का रेट चल रहा है, बट एक बंदे को अर्जेंट यूएसए जाना था, तो उसने कुछ 1.10 में निकल गया, तो उसको 2 दिन में बेच चला गया तो फ्लैट. I have seen ridiculous prices में फ्लैट बिक गए हैं. एक अच्छा वाला टॉप फ्लोर फ्लैट था. ऑफ कोर्स टॉप फ्लोर कैन बी अ माइनस पॉइंट बिकॉज इन समर वो तप जाता है और मानसून में लीकेजेस होते हैं and all this. But at the same time it was much larger than other flats and it was sold in a bank auction at 9 lakh rupees. Oh my God. 9 lakh. Only 9 lakh? नहीं 9 lakh of course. मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ where my flat might have cost around 25-30 lakh. अच्छा, ओके. उस कॉन्टेक्स्ट में 9 लाख. बट मेरा फ्लैट अगर 30 में के आसपास था, उसने 9 लाख में ही बॉट अ फ्लैट विच इज लार्जर देन माइन. यू नो, सो यू कैन अफोर्ड टू गेट बार्गेन. अब वो 9 लाख के ऊपर उसने हो सकता है कि 2-4 लाख या 1 लाख उसने दिया होगा किसी बैंक एम्प्लॉय को, वो होगा. और वो थोड़ा बंदा भी वो टाइप का था, सेटिंग करने वाला बंदा था. So only source for us is a broker, but as of now, broker अच्छे broker मिलना. Or you go into banks and you ask. You go to banks and directly ask auction. Or and can we go directly to builder and ask if any investor property is there with them? No, वो नहीं, वो investors को वो competitors मानते हैं. अच्छा. See, a builder will always try to block the investor. Okay. Builder कभी ऐसे नहीं कहेगा हाँ मेरे बिल्डिंग में वो बेच रहा है, वो बोलेगा मेरा इन्वेंट्री मैं बेचूंगा ना. आप बायर हो, why will he direct you away from himself and to somebody else? नहीं, उसके पास इन्वेंट्री है ही नहीं, तो वो डायरेक्ट नहीं करेगा फिर भी इन्वेस्टर के साथ. May not. Again, you're not approaching builder. You're talking about sales office. Okay. Yeah, right. So you are never going to get to the top builder. वो जमाना गया. एंड वही हम लोग ये भी सोच रहे थे बीच में एक लेते हैं, अच्छा नहीं लगा बाद में बेचते, बट वो फिर से स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के चार्जेस वी आर पेइंग ट्वाइस प्राइस इन दैट केस. नहीं, वो चल जाएगा, फिर भी वो चल जाएगा. नहीं, बट मैं अननेसेसरी गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पे करी. अंडर कंस्ट्रक्शन में गवर्नमेंट को अननेसेसरी जीएसटी भरने को तैयार हो. हाँ, ओके. जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल वंस इट इज रेडी पोजीशन. मीन्स हम लोग जो सोच रहे ड्रीम होम होगा तो ही लेंगे, वो हम लोग निकाल देना हमारे दिमाग में. कम से कम ड्रीम होम निकाल दो, हैव हाई स्टैंडर्ड. हाँ, लेकिन द थिंग इज दैट कि वो स्टैम्प रजिस्ट्रेशन एक बार, ये होम नहीं मेरा ड्रीम होम रहेगा, फिर भी अगर इट इज नियर बाय आई कैन सी इट कैन बी गवर्नमेंट इन द सेंस यू सी इट एंड यू आपका दिल आ जाता है वो ड्रीम होम. आई कैन अंडरस्टैंड दैट. Okay, but you have to be very rational about it. Right. So आप बजट में भी कभी मिल जाएगा, आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, right? You know. Then too, if it is नहीं है तो भी we should not means इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए. स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन जाएगा डबल इतना नहीं सोचना चाहिए. And what about that Ghodbunder रोड का कुछ आपको आइडिया? अच्छा, where should we? Some places are good.
I have visited some places. I don't remember. थोड़ा घोड़बंदर से काफी दूर अंदर जाता है. Which one? Some of the Lodha projects are like that. काफी अंदर है. अच्छा. काफी दूर है. So you will have to consider what is your. It depends on your lifestyle. Okay. वो अंदर होना. For example, if you're living in a place which is well connected, तो कभी भी कहीं से भी उतर के रिक्शा ले लेंगे. Kind of a comfort will always be there. Okay. रिक्शा टैक्सी वहाँ पे आते हैं, वो कंफर्ट रहेगा. बट नहीं है तो यू विल हैव टू से अरे यहाँ पे आता नहीं है, ऑटो वाले आते ही नहीं. और आते हैं तो 200 रुपया लेते हैं, 300 रुपया लेते हैं, you know, from the nearest station. So now then you will really feel that you are staying in an outpost. No, while going there only हम लोग को बहुत सर दर्द होने लगता है वो ट्रैफिक की वजह से. हाँ, बोरोगी रोड है ना वो. तो कभी कभी जैम बहुत जैम रहता है. कभी नहीं, हमेशा ही रहते हैं. Okay, so you are more frequent traveler. I am not. I'm a rare traveler. No, not frequent. Means when we are going to. घोड़बंदर में मैं बहुत यानी I can't remember the last time I went. Must be at least a year ago. But there we get in our budget में मिल रहा है उत्तर. हम लोग को इधर विसिनिटी में वसंत विहार and everything. We are searching in वसंत विहार. वही देखिए आप. So you set it off. You just think. Suppose you have to spend 1 hour in traffic every day. Yes. Are you traveling often? If you are not traveling often. No, we are not traveling often. Then maybe. Then see, if you are not traveling often, then ठीक है, ट्रैफिक रहता है, मुझे क्या करना है? Our concern is right now is our kids school. हाँ, तो kids के स्कूल का डिस्टेंस क्या है? What is the you know accessibility? Where my kids studied, I used to बस मिस हो जाता था. I used to go and drop them off. Okay. Yes. You know, और फिर रिक्शा इतने थे कि ऑटो भी जल्दी मिल जाते थे. कभी गाड़ी से ड्रॉप करता था, कभी ऑटो से ड्रॉप करता था. Correct. और फिर बच्चे लोगों को 3-4 पेरेंट्स ग्रुप टुगेदर एंड से ओके आज ये पेरेंट जाएगा बच्चों के साथ, रिक्शा में छोड़ के आएगा. वी कुड वर्क आउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स. और बच्चे भी यानी 15 मिनट में यू कुड रीच स्कूल एंड यू डिडंट हैव एन एंजाइटी. अच्छा, अगर मैं उस दिन लेट चला गया, बच्चा क्या करेगा? बच्चा ऑटो पकड़ के आ जाएगा. Which happened, which is how things started happening. At first caused lot of anxiety. अरे तू कैसे आ गया? मैं पहुंचने में लेट हो गया. नहीं, हमारा स्कूल जल्दी छूट गया आज. So instead of waiting for you for 2 hours, मैं ऑटो पकड़ के आ गया. Right. So this kind of comfort level will be there. Correct. जहाँ पर अगर आबादी है, अगर आबादी नहीं है तो then you will worry. अरे बच्चा चला गया तो इस जंगल में कहाँ खो जाएगा? वही. Correct. These are some things you will need to worry. And again, बच्चों को ये स्कूल टाइमिंग अगर दोपहर को छूटते हैं तो वो एक लेवल ऑफ वरी है. विंटर इवनिंग फॉल्स वेरी अर्ली. 6-6:30 को अंधेरा हो जाता है. Right. यू नो, तो स्कूल टाइमिंग्स अगर शाम को छूटने वाले स्कूल हैं, तो देन यू विल हैव टू वरी अबाउट इट. अभी अंधेरा हो गया है. That's why उधर वो बहुत डेजर्टेड है अभी भी घोड़बंदर रोड. अभी स्कूल तो बड़ा है बिकॉज एरिया उनको मिल गया बड़ा. Right. It's not yet that area is still थोड़ा गांव जैसे है अंदर. Right. प्रॉब्लम हो जाता है. You have to look at all of that. You have to. So one of the things you could consider, एक सोच आपको दे रहा हूँ, आप भाड़े पे 1 साल के लिए वहाँ पे रह लो. If you are considering an area, 1 साल के लिए वहाँ पर एक भाड़े का घर ले लो. Yes. भाड़े का घर. हम लोग बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो गए थे. आई हैव सीन योर वीडियोज. आई थॉट ही इज द पर्सन वी कैन कनेक्ट विद. हम लोग के मरीज से समझ सकते हैं आप. ऐसे मुझे लगा विल कनेक्ट विद यू. आई होप मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ. हाँ, नहीं, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए हम लोग लगा हम लोग हमारा घर ले ही नहीं सकते अभी भी. ऐसे फिलहाल तो भी सच में वही लग रहा है. बट आपकी बातों से तो मुझे लग रहा है कि वी कैन ट्राई इन दैट डायरेक्शन. हाँ, पता नहीं, यू कैन आस्क. सर व्हाट अबाउट सपोर्ट? हो जाएगा, कभी क्लिक हो जाएगा. हाउ डिड यू गाइस फाइंड ईच अदर?
We were together in college. क्लिक हुआ ना? हाँ, वैसे कितने कितने कुंवारे बैठे हुए हैं जो कहते हैं यार सेटिंग होता ही नहीं है किसी लड़के के साथ। अंडरस्टैंडिंग कोई मुझे समझने वाली पैदा हुई है कि नहीं, आई डोंट नो, नहीं यू नो, वाइस वर्सा देयर आर गर्ल्स वंडरिंग exactly. मेरे टेम्परामेंट का लड़का मिले तो शादी करूँ ना, शादी के लायक हो तो शादी करूँ ना, एंड देन यू गाइस फाउंड ईच अदर, Yeah. तो घर भी मिल जाएगा। So, one thing, like what do you think about the Upper Thane or Palava or somewhere in Navi Mumbai, like Kharghar, Panvel? Good you asked. Okay, chalo. I will do one unexpected thing. I'll recommend that you guys should check out one Lodha project. और लोधा में the project is Casa Rio. Okay, so most of Palava is Casa Bella. Okay, Casa Bella Gold, ऐसे सब नाम के, तो it is being sold. There is one place called Casa Rio. It has one downside. The downside is जब फ्लडिंग होता है तो पानी का बेसमेंट के ऊपर तक आ जाता है पानी, यानी पलावा का बोल रहे हो ना? पलावा में, कासा रियो में काफी पानी आता है। Correct. Okay, there are some buildings with names like river side जो एक्चुअली रिवर जैसे ही लगता है, और उसके बहुत जोक्स भी बने हैं। हाँ, ओके, बहुत मीम्स बने हैं उसके नाम पे, यार रिवर व्यू है और रिवर दिख रहा है, मानसून में रिवर ही रिवर है। हाँ वो है। बट देयर आर ऑल्सो, उसमें भी इन दैट प्रोजेक्ट look for the ones which are in relatively higher grounds, because there are levels. Some are low lying, some are high lying. Generally speaking, ये बारिश फ्लडिंग वाले दिन I don't know 3-4 साल में एक बार आएगा. But Casa Rio, according to me, is one of the beautiful places that Lodha has constructed. Okay. And बहुत livable environment, especially since you guys aren't commuting much. Very livable, not very high rise. I'm talking about, there are different types of buildings. He has constructed some flat buildings around 8-9 stories high. He has constructed some other buildings which are like 20-30 stories high. I'm not talking about the 20-30 stories. I'm talking about, you are taking उधर फ्लड पानी आता है लेकिन ना? पानी आता है। कासा रियो में ही एसटीपी का भी इश्यू था। ओके, मतलब कासा रियो का एक प्रोजेक्ट, एक बिल्डिंग में एसटीपी का इश्यू था। लेकिन कासा रियो को आप चेकआउट करिए, आई एम श्योर पीपल विल बी सेलिंग। इनफैक्ट आई हैड अ फ्रेंड हु कॉल्ड मी देयर, ही वाज ग्रम्बलिंग, ही सेड क्रिश यार तूने लोधा को क्रिटिसाइज किया, बहुत सही क्रिटिसाइज किया, बहुत गंदा प्रोजेक्ट है, ये है वो है, चल आके देखता हूँ। आई वेंट टू हिज हाउस, I went around his house. मैंने सब दीवार को ठोक बजा के देखा। मैं बोला तेरा प्रॉब्लम क्या है बोल। You tell me what is your problem in this house because it's a beautiful house. Absolutely good finishing. Now every building may not have been finished in the same finish with the same finishing, but you will have to go and see. The house that he showed me, and then I have visited another one house over there in Casa Rio. अच्छा बनावट है, good house, airy house. घर के लिए जो चाहिए वो सब कुछ है इसके अंदर. Very good vibes, very good feel. कंपाउंड में उतरोगे, ब्यूटीफुल कंपाउंड, बैठने के लिए जगह है, बच्चे लोग खेलेंगे, सिक्योरिटी है, and there are many positive features. And it is likely that you will get it within your budget. Okay. It is very likely you will get a good house within your budget. No, I am not getting you. Means what you're saying is getting flood when in a rainy, then too it's good. See, so what I'm saying is, see, flood happens in some part. There is a high lying and there is a low lying area. Okay. I should go for high lying. You should go for high lying area within the same Casa Rio. Okay. वो पूरे कासा रियो को हम बदनाम नहीं समझ सकते। और दूसरी बात है, यस चलो फ्लड आता है, लेकिन ओके, टू गिव यू एन एग्जांपल, आई एम लिविंग इन बोरीवली,
In Borivali, in my building, my building is on top of a hill, so flooding होने का chance ही नहीं. But there are localities 1 kilometer away from me, places which are considered good localities. जहाँ पे once in 4-5 years जब पानी आ जाता है तो बहुत आता है. उनके बेसमेंट अंडर वाटर चले जाते हैं. कार्स है तो पूरा सबमर्ज हो जाएंगे, पानी के अंदर डूब जाएंगे कार. Okay. So there are some buildings like that, but you can't say the whole area is bad because of that. You have to see which is the bad place in that good area, in that area overall. Just now he's searching. He got 2 BHK in 58 lakhs. Sorry. हाँ, है ना. But it's like school So it side can भी be an रहेगा. advantage also. It can be an advantage because people will sell at a discount. Yes, yes. So you need to be sort of like bargain hunter. And there are schools as well in this There are area. schools also. And what about this Upper Thane? He has spoken. Upper Thane is good. Not yet developed. अभी भी डेवलप नहीं हुआ है, and it is really really far. बहुत दूर है, बहुत ही दूर है. So again, you may check it out because you are not commuting much. Go check it out if you wish. I am not recommending it, and whoever is staying there is not particularly recommending it. अच्छा. So I am not going to recommend Upper Thane, but Lodha Kasario do check. Okay, You check it out and let me know. Like, उसके check everything, okay? Check at if there is a false ceiling, identify the false ceiling. कि वो क्या है? बाथरूम में अगर false ceiling है, not a good thing. But in Casario, I believe नहीं है. Okay. अच्छा, बाथरूम में भी दी है उन लोगों ने? नहीं होने चाहिए false ceiling. Why? बाथरूम में false ceiling नहीं होना चाहिए. Because false ceiling is made of gypsum board, and gypsum board पानी में सड़ जाता है, moisture में सड़ जाता है. Okay. So it will not stand up to moisture, गिर जाएगा. So gypsum board के ceilings नहीं होने चाहिए, especially in bathrooms. ये लोग बनाते हैं, and what is worse is वो false ceiling के अंदर आप देखोगे तो you will see upstairs neighbors sewage pipes and drainage pipes roaming around in your house. That is the reason नहीं होना चाहिए. ऊपर वाले का sewage drainage directly बाहर निकलना चाहिए from his bathroom. It should not roam around in your ceiling. Right. वो उधर से आपके सीलिंग में उतारते हैं और आपका बाथरूम टॉयलेट का नीचे वाले के सीलिंग में उतारते हैं. Which is a bad way of it's bad engineering. But they have done it. I don't think they have done it in Casario. They have done it in large parts of Palawan. Only the problem उधर डोंबिवली जाने के लिए शिल्पाटा पूरा पैक रहता है. हाँ, so that And is again one. it is the part of डोंबिवली, not in the central थाने भी नहीं आता है. Correct. That is only problem. So accessibility का अगर आपको बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम नहीं है तो आप कर सकते हैं. ओके, जाना आना वो एक डिस्काउंट करके. नाउ सपोज यू आर गेटिंग अ वेरी गुड प्राइस. थिंक अबाउट इट लाइक दिस, जो आप 130 वगैरह बोल रहे हो और आज 58 का यू सेड यू जस्ट ऑन द फॉर 58 to BHK, which means your loan will be that much lower. But what about the selling will be if I want to sell that again and come back You'll have to to sell at low rate. then low rate पे जाएगा. हाँ, लेकिन जो आपने लो रेट पे लिया है तो आपको दर्द नहीं होगा. Yes, दर्द नहीं होगा. Right. और किसी नसीब से हाई रेट में गया तो बहुत अच्छी बात है. यू हैव अ स्कोप फॉर दिस थिंग. उसमें बहुत बड़े बड़े ग्राउंड एंड एवरीथिंग है. बहुत बड़े ग्राउंड हैं. अच्छा है वो सब. इवन दूर दूर उसका लेआउट भी दूर दूर है. यानी वन बिल्डिंग टू अनदर बिल्डिंग गुड डिस्टेंसेस आर मेंटेन्ड. वो बालकनी टू बालकनी झांकना वगैरह वो टाइप का नहीं है. इवन सर वी हैव सीन कल्पतरू बाजू का कुलशित का हमारा के बाजू का. तो अभी वो मैंने सुना कि उनका कुछ इशू लिटिगेशन चालू है. उसके लिए उनको पोजीशन 2020 का पोजीशन भी अभी तक मिला नहीं है. बट उनका कुछ तो सनराइज बिल्डिंग है ना ऑलरेडी देयर जो रेडी है. व्हाट अबाउट दैट? रेडी मींस ओसी आया है. ओसी नहीं आया है. ओसी नहीं आया है मत लो. अच्छा, बट दैट इज बेस्ट. में तो बहुत एरी एंड
हाँ, लेकिन ओसी नहीं आया है तो मत लो। अच्छा, ओसी नहीं आया है तो ओसी अगर नहीं आया, इफ इट डजंट कम, then you will be left with a very big disadvantage. So don't buy a house which doesn't have OC. So our priority, like whichever building has OC, we should go opt only those. Correct. For ready to move के लिए. Correct. Okay. Under construction से बोला है. Sir, what about the Panvel area, Panvel Kharghar? I am not very familiar with that. अच्छा अच्छा. I am not familiar. हाँ, आप जाके check out करो. You tell me, you send me pictures, you send me videos. Okay, you give me a review. Okay. Because पनवेल खारघर में भी वही बड़े बड़े रूम्स, अच्छा है, आजू बाजू का एरिया भी अच्छा दिख रहा है एंड कॉस्ट कम है कंपैरेटिवली. You can check it out. You can check it out. And Navi Mumbai, some of those places train frequency is quite low, ना? Train frequency. Suburban trains. नहीं, अभी तो बेटर है. And our offices are only नवी मुंबई साइड ही है सब आईटी के. हाँ, तो आपको अगर कम्यूट करना है तो कम्यूट वाइज इट विल बी इजी. But you haven't reviewed anything from that side? No, I have not. I have not reviewed, as in I have not gone there and reviewed. Okay. But any idea, means we should go and check? Go and check. Go and check. Go and check. You see, like I said, even हर गली नुक्कड़ में there are good sides, bad sides, good locality, bad locality. Pricey locality, not so pricey locality. Overpriced locality, underpriced locality. आप underpriced में देखो naturally. Okay. If you are price sensitive, you should go to underpriced locality. For example, just to give you example, Borivali East, Borivali West. Borivali West, generally western suburbs में west is always costlier than east. Okay. Well, not with good reason. Not at all with good reason. Some of the time east is better than west. अच्छा. But for some reason west is always costlier. Yes. So अच्छी बात है, तो हम east में रहते हैं. Just a second, huh? उठा के सरला. So you should go for what is underpriced. अच्छा. Got it. Market से opposite सोचो. Be a contrarian. You know, it's like, you know about the share market investing philosophy, right? Right. Buy the dip. When everybody is selling, you buy. जब लोग पैनिक में बेच रहे हैं तभी आप खरीदो. Correct. जब लोग यानी लालच में खरीद रहे हैं तब आप बेचो. हाँ. That is. ऊपर बैठो. है ना, तो कमाओगे. You will be ahead of the crowd. So in this also you look at what is underpriced. There will be underpriced assets. In underpriced assets आपको सिर्फ रीसेल में मिलेगा. रेडी पोजीशन में नहीं मिलेगा, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन में नहीं मिलेगा. करेक्ट करेक्ट. एंड रेडी पोजीशन फ्रॉम बिल्डर भी शायद नहीं मिलेगा, वो ओवर प्राइस ही करके देगा आपको. ओके ओके. सो इफ यू वांट द underpriced asset, you buy it from retail. समझा.